Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. After neuron structure and function, we move towards the very next topic, that is neuron communication and the introductory accounts of resting membrane potential. So what is the neuron communication? How the neuron is communicate with each other. So language of the neuron is the basically nerve impulse or action potential through which neuron communicate with each other. The key to nerve impulse, basically this is the neuron's plasma membrane and its properties. Changes in the membrane permeability and the movement of ions, like membrane की permeability में तब्दीली आना, चेंज आना, और आइंस की मूवमेंट वो क्या कर रही है, वो हमारे पास एक नर्व इम्पल्स जनरेट कर रही है. वो ट्रेवल करेगी along the plasma membrane of the dendrites and the cell body and also the axon of each neuron. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. रेस्टिंग न्यूरॉन बेसिकली हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास वो वाली कंडीशन है जिसमें न्यूरॉन जो है एट रेस्ट होता है, रेस्टिंग कंडीशन पे होता है और किसी भी किस्म की कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं की जा रही होती. दैट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है रेस्टिंग न्यूरॉन का वो पोलराइज्ड होता है. This is the polarized the fluid on the inner side of the membrane, like membrane की जो inside है intracellular environment है वो क्या है, वो polarized है. basically वो क्या है, वो highly negatively charged है. और outer environment जो है हमारे पास extracellular environment of the plasma membrane, that is the highly positively charged with the fluid outside the membrane. And basically this the difference between the extracellular intracellular environment of the plasma membrane, basically this is the resting membrane potential. So this is the plasma membrane, and you can say that you can see that inside the plasma membrane there are the plenty of negative charge, and outside of the membrane there are the positively charged ion. So this is the condition when we say that the neuron is in the resting condition. Measurement of resting membrane potential. How we measure the resting membrane potential. Basically the resting membrane potential is measured in millivolts. millivolts में जो है resting membrane potential को measure किया जा सकता है. Normally the resting membrane potential is about 70 millivolt. Normally अगर देखा जाए तो resting membrane potential वो हमारे पास क्या है, 70 millivolt है. Due to the unequal distribution of charged ions, like वो क्या है, वो unequal distribution है ions की, सोडियम और पोटेशियम आइंस की, like sodium ions are more highly concentrated the fluid outside the plasma membrane. आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सोडियम आइंस हाईली कंसनट्रेटेड है, और इनसाइड पोटेशियम आइंस और नेगेटिवली प्रोटीन आइंस जो हैं वो क्या है, मोर हाईली कंसनट्रेटेड इनसाइड है. Diffusion of sodium and potassium ions. Basically the sodium and potassium ions constantly diffuse through ion channels. sodium और potassium ions क्या है, वो constantly diffuse होते हैं through the ion channels in plasma membrane, moving from region of higher concentration to the region of the lower concentration. high से low की तरफ जा रहे हैं through the ion channel, sodium and potassium ions. The concentration of sodium and potassium ions two sides of the membrane remain constant. Like दोनों sides पे जो है concentration sodium and potassium ions की constant रहेगी due to the action of the sodium potassium ATPase pump. sodium potassium ATPase pump के through क्या है, concentration जो है both sides पे extracellular intracellular environment में क्या होगी, वो constant रहेगी through the sodium potassium ATPase pump which is powered by ATP. So this is the sodium potassium ATPase pump. basically ये सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प का बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्या है कि ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इसको क्या करेगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इसको क्या करेगा, वो आउट लेके जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, और एवरी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के बाहर जाने पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्या करेंगे, वो इनसाइड मूव करेंगे बाय द यूज़ ऑफ ATP. The pump actively moves
sodium ions to the outside the cell and potassium ions to the inside of the cell, because it moves 3 sodium molecules out for each 2 potassium molecules, then it moves in. द पम्प वर्क्स टू इस्टेब्लिश द रेस्टिंग पोटेंशियल. पंप जो है बेसिकली वो किस लिए वर्क कर रहा है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो वर्कआउट कर रहा है. लाइक मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है वो एक फॉर्म में इस्टेब्लिश हो जाए, अपनी एक कंडीशन पे आ जाए. So the concentration gradient. So this is the neuron and the plasma membrane also. You can see that the inside of the neuron there is a negative charge and outside of the neuron is the positive charge. And resting membrane potential, sodium potassium pumps require ATP. 3 sodium are pumped out of the neuron and 2 potassium are pumped into the neuron. Both sodium and potassium move from a high concentration to a lower concentration, generate a resting potential of minus 70 millivolt. Basically you can see that there are the sodium ions and potassium ions, and influx are also seen.